Hello student, in chemical kinetics we discuss about rate. Okay. Second, there are two methods for the representation of rate, that is average rate, and second, that is instantaneous. Average rate depends on time interval while instantaneous rate depends on particular time. And how can we measure both rates? Average rate you can find out directly from table, okay? But in case of instantaneous rate, you have to draw graph, concentration versus time, and from the graph tangent slope we can find out instantaneous rate. Then we have to consider coefficient also while representing rate, ये भी मैंने आपको बता दिया. और उसके बाद हमारा पार्ट 2 था, that is factors, mainly 4 या 5 factors affecting rate. So rate and factor, so we have one relation between rate and factor, that is known as rate equation. तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें रेट इक्वेशन का मैंने लुक आपको बताया था. उसमें लेफ्ट साइड में रेट होता है और राइट हैंड साइड में फैक्टर्स होते हैं. रेट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट किसी के भी फॉर्म में आप कर सकते हो, लेकिन नॉर्मली हम लिखते क्या है, आर ए टी ई, सिंपली रेट. ओके. और राइट हैंड साइड में जो आप लिखते हो दैट इज के विच इज नोन एज रेट कांस्टेंट व्हिच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. तो अभी से माइंड में सेट कर दो, आपने के लिखा इट मींस आपने टेम्परेचर को मेंशन कर दिया. अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज कंसंट्रेशन, बट कीप इट इन माइंड, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली विथ पावर. क्लियर? और जो पावर है दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बट यू कैन ऑब्टेन पावर फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ओनली. क्लियर होना चाहिए. And there is no relation between coefficient and order of reaction. ये भी clear होना चाहिए. Sometimes both are same, sometimes not same. Okay? तो केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सबके रेट इक्वेशन फिक्स होते हैं विथ ऑर्डर, और ये सब प्रैक्टिकल से डिसाइड होता है. तो आपको तो टेक्स्ट बुक में जो भी दिए हैं उसको डायरेक्ट एक्स करना है. ऐसा मत बोलना कि सर ऑर्डर कहाँ से आया, मेरा एक ही आंसर होगा प्रैक्टिकल से. थोड़ा मैं आइडिया दूंगा आपको कि ऑर्डर कैसे निकालते हैं, उसके मेथड डिफरेंट, लेकिन वो आगे बढ़ेंगे. ओके. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टू न्यू टर्म्स सेपरेटली. यू कैन ऑब्जर्व इन रेट इक्वेशन. सो फर्स्ट वन दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपने ऑब्जर्व किया है, आपने नोट डाउन किया होगा. हाँ, रेट इक्वेशन को देखा था, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं सेपरेटली. ओके. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको कहाँ दिखाई देता है काइनेटिक्स में बताओ. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व इन रेट इक्वेशन. यस, यू कैन ऑब्जर्व इन रेट इक्वेशन, और वो भी पावर के फॉर्म में रहता है. किसका पावर? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. क्लियर? So write down definition about order of reaction. So write down in rate equation, power of concentration of reactant. Yes, power of concentration of reactant is known as order of reaction with respect to that reactant. Yes, with respect to that reactant. Order of reaction always with respect to particular reactant. Clear होना चाहिए. Okay, again I repeat, in rate equation, power of concentration of reactant is known as order of reaction with respect to that reactant. Is it clear? Okay. Now example. So in the last lecture I already discussed A plus B gives C plus D. So here two reactant and two product with their coefficient small a, small b, small c and small d are coefficient of A, B, C, D respectively. Clear? Okay.
Now, what about the format of rate equation? So rate is equal to, yes, यहाँ पे मैं रेट लिख रहा हूँ. रेट की रिप्रेजेंटेशन आप ए बी सी डी चारों के फॉर्म में कर सकते हो. मुझे रेट ए के फॉर्म में लिखना है. So according to kinetics minus 1 upon a dA by dt. Another option minus 1 upon b dB by dt. Third option plus 1 upon c dC by dt. And last one 1 upon d dt by dt, that is rate. क्लियर? लेकिन मैंने आपको बताया था हम यहाँ पे a के फॉर्म में लिखेंगे तो तीन को अच्छा नहीं लगेगा, बाकी तीनों को, तो बेटर है हम क्या लिखें, रेट. क्लियर? तो रेट का मीनिंग ऐसा होता है. लेकिन सामने आपके पास जितने भी कंपोनेंट है सबके बेस पे आप रेट लिख सकते हो, लेकिन अभी हम रेट वर्ड ही लिखेंगे. क्लियर? नाउ फैक्टर. So first factor, that is K. Actually this is temperature. K depends on temperature. तो आप माइंड सेट कर देना, आपने K लिखा मतलब टेम्परेचर आ गया, K लिखा मतलब टेम्परेचर आ गया. In future we will discuss relation between T and K. Clear? तो बात को हम देखेंगे. Another factor, that is concentration. Concentration जो हमें लेना है फैक्टर में, that is only for reactant. Product is not applicable here. प्रोडक्ट एप्लीकेबल कब होगा, रेट रिप्रेजेंट करते हो तब. ये रेट इक्वेशन की बात हो रही है. और रेट इक्वेशन में लेफ्ट साइड हम इन दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड जहां पर फैक्टर होते हैं कंपलसरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली. सो देयर आर टू रिएक्टेंट A and B with power X and Y. Yes. So what is the meaning of X? So X is equal to, write down where X is equal to order of reaction with respect to A. Y is equal to order of reaction with respect to B. Therefore x plus y is equal to n, and that is total order of reaction. Clear? तो ये आपको पता होना चाहिए. So write down this example. Okay. Next point. There is no relation between stoichiometric coefficient and order of reaction for particular reactant. Yes, write down. There is no relation between stoichiometric coefficient and order of reaction for particular reactant. For example, Ax or A. A that is coefficient of A, clear? And X that is a order with respect to A. Sometimes these two are same and sometimes not same. तो दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ये क्लियर होना चाहिए. और उसका एग्जांपल लिख देता हूं. एक एग्जांपल लिखते हैं. 5 Br minus plus BrO3 minus plus 6H plus is equal to 3Br2 plus 3H2. Clear? So this is one chemical reaction. अब इसकी रेट हम कितने फॉर्म लिख सकते हैं, 5 फॉर्म में. लेकिन अभी हम रेट इक्वेशन लिखेंगे. रेट इक्वेशन में सिंपली वी हैव टू राइट रेट इज इक्वल टू, ठीक है, यहां पे K. Now there are 3 reactants. You have to make 3 brackets. First for Br minus, second BrO3 minus, and third H plus, X, Y and Z. Clear? So initially we don't know X, Y and Z, but after experiment we have values of X, Y and Z. So from experiment, value of X, that is 1. It means order of reaction with respect to Br minus, that is 1, and here 5, no relation. Clear? BrO3, Y, that is also 1. यहाँ पे दोनों साइड हो गए. And what about Z? From experiment, value of Z, that is equal to 2. So in that case, respect to Br minus, both are different, coefficient as well as order. BrO3, both are same, and plus, both are different. That's why I am saying there is no relation between stoichiometric coefficient and order of reaction for particular reactant. Is it clear? Okay.
next example. Now here order of reaction, order of reaction, order of reaction with respect to Br minus, that is 1. Okay, order of reaction with respect to Br minus is equal to 1, and order of reaction with respect to H plus, that is 2. Therefore total order is equal to 1 plus 1 plus 2, that is equal to 4. So 4, that is a total order of reaction. Clear? So this is information about order of reaction. Now add 2 more line. Next one. Order of reaction always obtain. Order of reaction always obtain from experiment only. Order of reaction always obtain from experiment only. And next point, order of reaction may be integer, comma, fraction or even zero. Order of reaction जो है integer भी हो सकता है, fractional value भी हो सकती है, sometimes it may be zero also. ठीक है? So this is the information related with order of reaction. Separate information about order of reaction. Clear? तो रेट इक्वेशन में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था उसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में आपको बता दिया. Now in rate equation another new term that is called K, which is known as rate constant. तो उसके बारे में भी हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं. ओके, सो न्यू टॉपिक दैट इज अ रेट कांस्टेंट. तो पहले इसका एक स्क्रीनशॉट निकाल दो. ओके, बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं रेट कांस्टेंट. So new term in kinetics, that is rate constant. Now rate constant, that is the proportionality constant. So how can we represent rate constant? Now see, this is the rate equation. How rate constant comes in picture? Okay, so you know this is the proportionality constant. So suppose आपने लिखा नहीं तो इसका मीनिंग क्या होगा? This is the rate. So in kinetics, rate directly proportional to concentration of reactant, और वहां से हम rate constant को identify कर सकते हैं. Is it clear? So write down title, that is the rate constant. अब उसको identify करते हैं. उसको identify कैसे करते हैं वो देखो. Write down in chemical kinetics, rate of reaction. In chemical kinetics, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant with appropriate power. Yes, with appropriate power that is order. Clear होना चाहिए. Okay, in chemical kinetics, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant with appropriate power. Clear? Now we have to assume a reaction R gives P. Simple reaction. Okay, R gives P with coefficient 1, 1. Now what about rate? So rate is directly proportional to concentration of reactant with appropriate power, and that is power. Without experiment you cannot write power. Clear? गलती से 1 1 लिख देना. सर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया. Again I repeat, there is no relation between coefficient and order. ये clear होना चाहिए. Okay? तो ये जो rate है, you can represent rate in the form of R, that is minus dr by dt, in the form of P plus dp by dt. ये rate है. Clear? Rate की representation तो reaction में जितने भी component आपको दिखाई दे रहे हैं उसके फॉर्म में कर सकते हो. This is rate. लेकिन ये सब लेफ्ट साइड में होगा. राइट हैंड साइड में जो टर्म आता है that is concentration of reactant only. इसमें प्रोडक्ट नहीं आएगा. Order
रिएक्शन ओनली, क्लियर होना चाहिए, नॉट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट. Sometimes in JEE or in exam, question like this, fundamental question. What is the order of reaction? What is the order of reaction with respect to P? Student confused हो रहे हैं क्यों? सर order of reaction की मान लिख के आ जाते हैं. ऑर्डर जो होता है वो पावर है और वो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ही पावर होता है, प्रोडक्ट तो है ही नहीं उसमें. सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट? ये पॉसिबल है ही नहीं, क्लियर होना चाहिए. ओके, नाउ वी आर going to introduce rate constant. Okay, so rate directly proportional to concentration of reactant with appropriate power, and that is n. Okay, now rate is equal to, therefore rate is equal to k, yes, r to the power n. So this is the format of rate equation where k is proportionality constant. Write down where k is proportionality constant, which is known as rate constant. Yes, it is known as rate constant. So rate constant को मैं ऐसा identify कर सकते हैं. Clear? So k, that is a proportionality constant, which is known as rate constant. Next point. Rate constant k depends on T. It means value k की जो value है that depends on k. In future we will study relation between T and k in the form of Arrhenius equation. Okay, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना है, लेकिन अभी क्लियर होना चाहिए k की वैल्यू किस पे डिपेंड है? टेम्परेचर पे डिपेंड है, क्लियर होना चाहिए. Okay, now another important topic here, that is unit of k. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट ऑफ k का यूनिट क्या होगा? ओके, तो उसके लिए देखो फ्रॉम रेट इक्वेशन k is equal to rate upon time. देख सकते हैं कि k is equal to rate, sorry, k is equal to rate upon r to the power n. K is equal to rate upon r to the power n. Now what is the unit of rate? What is the meaning of rate? Okay, first of all tell me what is the meaning of rate? Sir, change in concentration upon time. Yes, पढ़ा है. Okay, rate का meaning क्या होता है? Rate means what? Change in concentration upon time. ये rate है. Clear? और नीचे r to the power n. Clear? Okay. Now tell me concentration you can measure in terms of normally molarity and time in terms of second. तो इसका क्या होगा? molarity per second. हमने पढ़ लिया molarity per second on molarity power n. Okay, so simple, molarity 1, molarity power n, so you can write molarity 1 minus n. Okay, or second plus. So this is the general format of unit. Now what is the meaning of molarity? Molarity का meaning क्या होता है? Molarity means सिर्फ मोल और लीटर, ये हम लिख सकते हैं. So this is general form for unit of k. Now see, unit of k that is not fixed. In chemical kinetics, unit of k is not fixed. Unit of k varies with order of reaction. ऑर्डर चेंज होगा तो k का यूनिट भी चेंज हो जाएगा. क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इतना पहले लिख दो, स्क्रीनशॉट ले लो, नो इशू. ओके, फ्रॉम रेट इक्वेशन k is equal to rate upon r to the power n, change in concentration upon time, k is equal to molarity per second m to the power n, so 1 minus second inverse mole per liter second inverse. Is it clear? Now write down, therefore unit of k, make underline, yes, therefore unit of k depends on order of reaction. ये भी पता होना चाहिए, k का जो यूनिट है वो ऑर्डर पे डिपेंड है. ओके, और उसके लिए हम एक टेबल में लिख रहे हैं. दिस टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट.
नॉर्मली खुद के बोर्ड की एग्जाम जितनी भी तक दी है उसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेगा, नॉर्मली आप प्रॉब्लम कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में same thing and next column unit of k. Okay, so first of all suppose n is equal to 0, we know order may be 0, okay? Sometimes order may be 0, so if you put 0 here then what happens, unit becomes mole per liter 1 मोल पर लीटर बनी होगा, सो इसको स्प्लिट करके मैं लिख रहा हूँ मोल पर लीटर पे लीटर इनवर्स एंड सेकंड इनवर्स। सो फॉर जीरो ऑर्डर यूनिट ऑफ के मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, दैट इज लाइक रेट। जीरो ऑर्डर में आपने अपना रेट और के दोनों का रेट सेम होगा, जिसका रीजन सिंपल है, मोल पर रिएक्शन ऑफ इनवर्स ऑर्डर क्या कर दिया आपने, जीरो में किया तो आर का पावर जीरो मतलब वो तो 1 हो गया, तो रेट और के दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। रेट और के सेम का मीनिंग होता है वैल्यू भी सेम, मीनिंग भी सेम, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट ऑर्डर पे यहां पे मैं लिखूं 1 - 1 दैट इज 0, सो यूनिट ऑफ के सिंपली सेकंड इनवर्स। नाउ 2, okay, so 1 - 2 that is -1, so -1 means mole -1, yes, liter and second inverse. Now third, simple, mole -2 liter square second inverse, so by this way nth order that is mole, यहाँ पे 3 है तो -2 है, तो n है तो 1 - n और liter n - 1 and second inverse, so you have to remember in the form of n। तो फोर्थ ऑर्डर यहाँ पे मान लो कि फोर्थ ऑर्डर यहाँ पे है, so n equal to 4, 1 - 4 तो यहाँ पे -3 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, क्लियर। सेकंड इनवर्स दैट इज कॉमन in all order, so this is the information about rate constant, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। तो केमिकल काइनेटिक्स में अभी जो भी टर्म्स आ रहे हैं उसको माइंड में सेट करते जाओ। रेट क्या है, रेट इक्वेशन क्या है, रेट और रेट इक्वेशन का डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, रेट को कैसे लिखते हैं, कितने फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, कोफिशिएंट कहां डालते हैं, प्लस कहां लिखते हैं, माइनस कहां लिखते हैं, दैट इज रेट। रेट इक्वेशन में लुक कैसा होता है, लेफ्ट साइड रेट लिखते हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, राइट साइड में फैक्टर लिखते हैं, फैक्टर में पहले के लिखते हैं, के का मतलब टी आ गया, बाद में कंसंट्रेशन लिखते हैं और रिएक्टेंट का ही लिखते हैं, उसका पावर होता है, पावर मतलब ऑर्डर कहां से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा, कोफिशिएंट डायरेक्ट पता चल जाता है, ऑर्डर क्या है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, फ्रैक्शन हो सकती है, जीरो हो सकता है, रेट कांस्टेंट क्या है, टेंपरेचर पे डिपेंड है, के की वैल्यू टेंपरेचर पे डिपेंड है, उसका यूनिट एन पे डिपेंड है, उसमें इंपॉर्टेंट। ओके, यूनिट ऑफ के डिपेंड्स ऑन एन, ये याद रखना। के जो है उसमें दो पॉइंट है, टी और एन। ओके, टी जो है ये का वैल्यू और के की वैल्यू किस पे डिपेंड है, टी पे, और के का यूनिट किस पे डिपेंड है, एन पे, ये दोनों मिक्स नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये सब बेसिक टर्म्स है, दैट इज we have to consider chemical kinetics। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें एक और टर्म हम पढ़ने जा रहे हैं, वो भी एक बेसिक टर्म है जिसको बोलते हैं मोलेकुलरिटी। क्या बोलते हैं, मोलेकुलरिटी। यस, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म इन केमिकल काइनेटिक्स, लेकिन उसके लिए थोड़ा लेक्चर टाइम ज़्यादा चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलेकुलरिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी वेरी मच।